Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is corrosion. So let us start with the topic corrosion. Dear students, we are able to see that metals can go for tarnishing with the upper layer, and which is known as corrosion. So silver articles become black after some times when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide. Copper reacts with moist carbon dioxide in the air and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is copper carbonate. Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of a brown flaky substance called rust. So dear students, now we need to know that let us find out the conditions in which the rusting takes place. So we are going to do one small activity which is going to let us know that which are the conditions which are required in order to go for iron converting into rust, that is tarnishing the upper layer of the metal. Dear student, rust is the word used only for iron, but corrosion is the word used for all the metals. So this is the difference over here. Let us start with the activity. Take 3 test tubes and place clean iron nails in them. Label the test tubes A, B and C. Pour some water in test tube A and cork it. Pour boiled water in test tube B and add 1 ml of oil and cork it. The oil will float on the water and prevents the air from dissolving in the water. Put some anhydrous calcium chloride in test tube C and cork it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moist, if any, from the air. Leave this test tube for few days and then observe. So dear student, what is happening it over here? We are taking the 3 test tube A, B and C. So in test tube A, let me tell you, in test tube A, what do we have? We are having the iron nail. And what we are having? We are having the water. Now what we do? We insert the cork. Now there are 2 things in the test tube. Air also, water also, and iron nail which is dipped little in water and other part is in the contact with the air. So this is the first condition. Second condition, we are having completely the iron nails completely dipped into the water, and above the water we have the layer of the oil. But dear student, remember, the water which we are taking in the test tube B is boiled water. So boiled water, when we are boiling the water, the dissolved oxygen is removed. And do you know, that is why when we drink the boiled water, it tastes little bit different, and we call it as a flat water, which is without any oxygen, dissolved oxygen. So boiled water is also like a deoxygenated water. Okay, so above that particular boiled water in which there is no oxygen present, we are having the layer of the oil. So it will be a protective layer. It will not allow the air to get dissolved in the water. Now what happened? In this also we insert the rubber cork. Okay. And now in the third test tube, there is no water, only iron nail. And what do we keep in this? We keep anhydrous calcium chloride. That is completely a drying agent. Calcium chloride क्या करता है? अगर टेस्ट ट्यूब में थोड़ा भी मॉइस्चर है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? और आपका जो भी वाटर है उसको आपके आयरन नेल के साथ कांटेक्ट में आने नहीं देगा. एयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इट ओवर हियर? दैट in these 3 particular test tubes, out of which is going to contain the rusting of the iron, in तीनों test tube में से किस में rusting of iron होगा? That is what we have to see now. So think and give the answer that in which one the reaction will take place. So dear student, third test tube जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सिर्फ प्रेजेंट है. वो क्या करेगा? आपकी टेस्ट ट्यूब में जितना भी एयर है उसमें जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया. तो आपका आयरन नेल जो है वो सिर्फ एयर के कांटेक्ट में है, वाटर नहीं है, तो रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है? देन वी टॉक अबाउट टेस्ट ट्यूब बी. टेस्ट ट्यूब बी में क्या प्रेजेंट है? एयर तो है, ऊपर एयर है, बीच में ऑयल का एक लेयर है और नीचे क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाला हुआ वाटर.
मीन्स इट इज द वाटर विच इज बॉइल्ड एंड रिमूव द डिजॉल्व एयर, पूरा एयर उसमें से हमने निकाल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट आयरन नेल इज ओनली इन द कॉन्टेक्ट विद द वाटर, इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द एयर, सो हियर ऑल्सो द रस्टिंग इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द test tube A, clearly seen in the picture, half of the nails are there in the water and half of the nails are there in the contact with the air. Now dear student, यहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट है, वाटर भी है जिसमें भी डिजोल्व ऑक्सीजन है, और ऊपर से आधा नेल जो है वो आयरन जो है वो एयर के साथ भी कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों कंडीशंस है, तो यहाँ पर रस्टिंग होगा। व्हाट डज इट मीन्स, in test tube A the rusting is going to take place, in test tube B only water is there, no oxygen is coming in the contact with the nail, so reaction is not going to take place and there will be no rusting. In test tube C only air is there and there is no water, opposite of test tube B, so in this case also there will be no reaction, it means it is also not going to rust. I hope the activity is very clear, and sometimes this activity is also asked in the board exam. So dear student, you have to remember that what is the condition for rusting? You should go for having both the component. आपके पास दोनों component होने चाहिए, जैसे कि air and water. Both if comes in the contact with the iron nail, iron material, then only it goes for rusting. ठीक है? One more thing. Rusting is the example of corrosion. Rusting is the example of corrosion. You cannot say that corrosion is the example of rusting. Why? Because corrosion is used for all the metal. Dear student, कोई भी metal हो, जैसे कि copper हो, silver हो, कोई भी metals हो, जब उसका upper layer टर्निस हो जाता है, टर्निस का मतलब स्पॉइल हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से, तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बुलाते हैं कोरोजन। किसी भी मेटल का ऊपर का लेयर स्पॉइल हो जाना, दैट इज नोन एज कोरोजन। बट ये कोरोजन हर एक मेटल में हो सकता है, इट डिपेंड्स फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। जैसे आयरन में इजीली हो जाता है, कॉपर में होता है, सिल्वर के हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो जब हम खरीदते हैं इट इज वेरी शाइनी, बट आफ्टर सम टाइम्स यू नो इट बिकम स्टार्ट हैविंग द ब्लैक लेयर ऑन इट, तो हमें पता है इट इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद वाटर ऑल्सो, इट इज कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द स्वेट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम अवर बॉडी ऑल्सो, so our body, the sweat which is present, certain amount of acids and salts are also there, so it is tarnishing the upper layer of the silver also and making it black in color. So dear student, corrosion is the word used for all the metal. किसी भी metal का अगर ऊपर का layer tarnish हो जाए तो हम corrosion कह सकते हैं, but आयरन जब करोड हो जाता है तो हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, रस्टिंग। तो आयरन का जो कोरोजन हुआ, रस्टिंग हुआ, रस्टिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, बट यू कैन नॉट से दैट कोरोजन इज द एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर विथ यू एंड द एक्टिविटी इज ऑल्सो क्लियर। In our next video, we will see that how we can prevent the corrosion. हम corrosion को कैसे prevent कर सकते हैं. I hope you got the topic, and still if you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you.